secret of happiness is freedom. The secret of freedom is courage. The courage to make a difference, to fight what is unjust and wrong. While we are free to choose our actions, we are not free to choose the consequences of our actions. Actions therefore lead to our destiny, but actions themselves are led by character. Bribery and corruption have real-world consequences that affect individuals, communities, and entire nations. They hinder economic growth, stifle innovation, and spread a culture of impunity. According to a report by United Nations, corruption and bribery are estimated to cost the global economy more than $2.6 trillion, or 5% of global GDP is lost to corruption annually around the world. No excuse, unfortunately. But again, sadly, in developing countries, and I don't say it's just Pakistan because there are others. I've traveled in Africa, I've traveled in the East, I've traveled to Asia, and it's mostly there in all countries, but at different levels. It's not all pervasive, जैसे चंद मुल्कों में है कि हर शोबे में हर लेवल पे and you come across this from the lowest to the highest. So why do people take bribe? Is it merely a flaw of character, a matter of need, or just greed? Well, different intellectual people have different opinions on this. Mostly, unfortunately, it is greed. It is greed. And I think frankly, it's a form of blackmail. And I call it blackmail. It's not a very nice word. But basically, that's it. You are being held to ransom. आप कुछ काम करवाना चाह रहे हैं, आपका काम होगा नहीं जब तक आप वो रिश्वत नहीं देते या पैसे नहीं देते उनको. असल में हमारा माशरा ही कुछ ऐसा बन गया है कि अगर हम एक काम कराने के लिए हम किसी ऑफिस में जाते हैं, अभी कंपनीज वाले इनके हैं, इतना रेड टेपिज्म है हमारे मुल्क में, वो अपना काम कराने जब एक जगह जाए तो वो उनको कहा जाता है कि ये काम के लिए आपको इतना देना पड़ेगा. अब वो बेचारे क्या करें, वो कहाँ जाए, उनको तो काम कराना है, उनको अपनी बिजनेस चलानी है. तो बेटा उसके लिए ये है कि मैं सिपाही जो पुलिस वाले रिश्वत लेते हैं सड़क पे खड़े हुए, मैं इनके खिलाफ नहीं. अगर रिश्वत नहीं लेंगे ये तो मर जाएंगे. 6 बच्चे 8 बच्चे, एक क्वार्टर 2 कमरों का, छत पे भी रह रहे हैं लोग, जमीन पे भी. तनख्वाह देखो क्या है पुलिस वाले की तनख्वाह. वो अगर लेता है पैसे तो जायज है, ऐसे लोग शिकायत न करें कि पुलिस वाले ने मुझसे पैसे लिए. अलबत्ता आप जब अपना काम करने के पास जाए, सरकारी अफसर के पास, मर रहे हैं तो मर जाए, मगर वो काम ना करवाए, पैसे ना दें. कि लोग रिश्वत लेते क्यों हैं? लोग रिश्वत इसलिए लेते हैं कि जब उनकी जो मीन्स हैं वो पूरे नहीं हो रहे होते, उनकी जो requirements हैं वो पूरी नहीं हो रही. Bribery and corruption have far-reaching consequences that go beyond financial gain. They erode trust in institutions, undermine the rule of law, and spread inequality. जो है वो माशरे का एक ऐसा नासूर है कि जिसकी वजह से जो है हमारे माशरे में जो है वो तबाही के अलावा और कुछ नहीं हो रहा. आप अगर देखें तो इस रिश्वत की वजह से ही लोगों के जो है मेरिट पर डिसीजन नहीं होते, ठीक है, और जब मेरिट पर डिसीजन नहीं होते तो ऑब्वियसली ऐसे लोग जो हैं वो माशरे का हिस्सा बनते हैं या उन ओहदों पर फायज होते हैं या उन फील्ड्स में जो है उनको आगे तरक्कियाँ मिलती हैं कि जिसकी वजह से हमारा माशरा जो है वो कामयाब नहीं हो पाता और हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता. दिलावर फिगार का शेर था, लेके रिश्वत फंस गया है, लेके रिश्वत छूट गया. तो क्या करें? Just like public sector, it is also a major issue for private sector. Many corporations have recognized the importance for addressing bribery and corruption. Some have implemented strict codes of conduct and have established internal control systems to prevent corrupt practices. Like every good company, हमारा भी एक कोड ऑफ एथिक है. जो भी भाई कोई ऑन बोर्ड होता है तो कॉन्ट्रैक्ट जब साइन करता है तो उसमें स्पेसिफिक क्लॉजेस इज सर्टिफिकेटेड एज वेल. ब्राइबरी इज़ वन, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं. बट सर उस पर वो साइन का पर्पज़ ये कोई द पर्सन एक्नॉलेजेस, राइट.
لیکن پھر ایک HR کی اورینٹیشن ہوتی ہے تو اس میں اس چیز کو ری ایمفسائز کیا جاتا ہے کہ وی ہیو اے کوڈ آف کنڈکٹ, وی ہیو اے ڈیڈیکیٹڈ ڈپارٹمنٹ QA جو اس کو انفورس کرتا ہے, اس کو میئر بھی کرتا ہے اور اس کو ایکشن بھی لیتا ہے کہ اگر کوئی سر انسیڈنٹ ہوتا ہے. However, despite these efforts, corruption still exists in many sectors, and some corporations have been accused of engaging in corrupt practices themselves. So, how do we solve this issue? اگر معاشرہ تباہ ہے تو اس کو مزید اور کوئی چیز تباہ نہیں کر سکتی. اگر معاشرہ صحیح ہوگا, حالات صحیح ہوں گے, تو پھر نہ رشوت کی ضرورت ہے نہ کسی غلط کام کی ضرورت ہے. جب تک ایک سسٹم پورا بدلے گا نہیں پاکستان کا بیٹا, یہاں سب چیزیں ایسی ہی چلتی رہیں گی. بس یہ بچپن سے بچوں کو یہ سکھانا چاہیے, جیسے باہر کے ملکوں میں ڈیولپ کنٹریز میں وہ سکھاتے ہیں کہ ٹیکنگ برائبس از رانگ اینڈ یو مسٹ نیور گیو اے برائب اور ٹیک اے برائب. سو بچپن سے یہ بچوں کو یہ سکھانا چاہیے. اسکولوں میں والدین, سب سے پہلے والدین اور اس کے بعد اسکولوں میں, دس شوڈ بی ڈرمڈ ان ٹو چلڈرن. But you do not either ask for or give a bribe. And وہی ایک طریقہ ہے. And throughout their education, right up to the university level, کہ آپ کو یہ بچوں کے, لڑکوں کے, لڑکیوں کے, یہ آپ کو ان کے دماغ میں آپ کو یہ ڈالنا ہے کہ یہ غلط بات ہے. اور آہستہ 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 it will take generations. یہ ایک دم اوور نائٹ نہیں ہوگا. But we have to make a beginning. We can't keep saying کہ بھائی اب یہ تو ہر جگہ ہے تو اب ہم کیا کریں, and we take the easy way out کہ چلو بھائی دے دیں. اور but that I think again there is no excuse for that. None whatsoever. Fighting bribery and corruption requires more than just individual acts of courage. It demands systematic change, transparency, and accountability at all levels of society. The fight against bribery and corruption is a collective effort. It requires individuals from all walks of life to come together, raise awareness, and demand change. It takes courage to confront the status quo and work towards a more just and transparent society. The choice is ours. What actions will you take to shape our destiny?